Hello all, my name is Nikhil and welcome to Definitive Detailing. जिस गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, दिस इज हियर फॉर कंप्लीट रेस्टोरेशन। वी डू अ लॉट ऑफ बाइक्स हियर जिसमें हम लोग सर्विस, मेंटेनेंस, कस्टमाइजेशन करते हैं। अदर देन दैट वी आर मेजरली इनटू रेस्टोरेशन ऑफ बाइक, जहाँ पे हम लोग कई पुरानी बाइक्स को कंप्लीट एक फ्रेश लुक देके वी ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इट वाज इन। द सेम वे द बाइक दैट वी हैव टुडे हियर इज 2015 रॉयल एनफील्ड बुलेट 500। ये जो बाइक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ very close customer to us. इनकी काफ़ी हम लोग गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं। So we were having the word the other day, जहाँ पे उन्होंने हमको ये बोला कि there's a bike which is with him since a long time, जिसको वो वापस revamp करना चाहता है, and that's when we got to see this bike. Talking about the bike, it's in running condition, कुछ ऐसा major काम नहीं है इंजन में. A few things here and there, that's it, nothing major other than that. 750 Street which was standing, जब उनका ध्यान उसके ऊपर गया, and he loved the color scheme on it. The color scheme on the 750 was black and maroon जो आता है उसका जो स्टॉक कलर है। So he said हम लोग इस कलर को इस गाड़ी पे ला सकते हैं क्या, the whole paint scheme. So that's when we gave it a thumbs up कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। Now what are we doing on the bike? We are not just painting few of the panels, we are completely restoring it. So when we say we are restoring it, इसमें बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ। The first thing is we have to pull every single bolt, every single panel, every single piece out of the bike, जिसमें हम लोग इंजन निकाल लेंगे, चैसी अलग हो जाएगा, टायर अलग हो जाएंगे, टैंक, everything will be different. You will not see the bike at all once it is completely out. So let's talk about the time for the project. Now, when we only panel paint, mudguard, tank, and some of the panels, naturally the time goes down drastically. But when we are restoring a complete bike, the time taken is on a very high end. First is गाड़ी को खोलना. Honestly, गाड़ी का assembly पूरा अलग करके पूरा गाड़ी खोलना is the most easiest job when it comes to opening the bike. बिकॉज इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गाड़ी को खड़ा करना है, रैंप के ऊपर पूरा गाड़ी खोल देना है। हीट रेजिस्टेंट पेंट के लिए स्पेशल पर्सन वहाँ पार्ट जाता है, जिंक प्लेटिंग के लिए कुछ पार्ट्स अलग जाएंगे, क्रोम प्लेटिंग वाले अलग उनके पास पार्ट जाता है। वी विल बी पेंटिंग द पैनल्स, सो एवरीबडी हैज टू कोऑर्डिनेट टुगेदर फॉर द होल पार्ट्स टू बी अगेन गॉट टुगेदर एंड देन वी स्टार्ट रीबिल्डिंग द बाइक। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट कंपेयर टू ओपनिंग द बाइक एंड अगेन असेंबलिंग इट? खोलना आसान है जैसे कि मैंने बता दिया, बट व्हेन यू आर पुटिंग द बाइक टुगेदर द होल थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ केयर। बिकॉज अगर जैसे कि चासी द पार्ट विच इज कम्प्लीटली इनसाइड द बाइक, अगर ये लगाते समय कुछ स्क्रैच आए, कुछ डेंट आए, कुछ चिपिंग हो जाए पेंट का, वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड व्हाइल बिल्डिंग द बाइक देयर आर फ्यू पार्ट्स जो डिटोरिएट हो चुके हैं एंड वी हैव टू टेक अ स्पेशल अप्रूवल फॉर इट कि सर ये भी हमको लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हेन द कस्टमर विल टेल अस कि हाँ ये लगा लीजिए, and then we again build the bike. So taking for this should be somewhere around 1.5 month is what we are guessing. हो सकता है कि पूरा काम महीने भर के अंदर भी हो जाए, but 1 month is what is a good time for the bike to build. In this we will be replacing the oil also, the filters also. A basic service will be done because the engine खोला जाता है, automatically all the fluids will be gone. So everything will be again fresh and brand new. So let's see how this goes. There will be I will be taking you
through a complete baby step walkthrough around the complete project, and step by step we'll get to see how the bike is being built. में सब नॉर्मली 3,500 तक पूरा हो जाता है। इसमें आपका एक्सटीरियर इंटीरियर पूरा इंक्लूडेड होता है। 3,000 After nearly working for 1.5 months on the project, here is the Classic 500. Yes, it did take us 1.5 months with the project, mainly because इसमें कई चीजें हैं जो हमको बाहर भेजनी पड़ी to get done. For example, the engine area, as you can see, the complete thing is again heat resistant paint, as we had spoken about. Many of the other parts, for example, the bolts, the fasteners that you see, all of them now are zinc plated. Why zinc plating? Because कुछ भी अगर होता है गाड़ी के ऊपर, the first thing which happens is corrosion. Bullets are known for this issue. Corrosion is one factor in the complete project. तो जितना भी आपने bolts या all the small parts of the bike, they should be taken care of. ये हमने ध्यान रखा था project में. The bolts, the fasteners, the washers, everything is properly zinc plated and again put back on the bike. If you notice, the rear suspension is brand new on the vehicle. जो previous suspension था, ये हमने discuss नहीं किया था, but it was completely worn out, so we replaced that. Talking about the meter, this specific meter we have replaced. ये भी एक worn out हो चुका था, so we thought of changing this also. Talking about the stickers, you see the stickers here. These are the new shape stickers जो आजकल Royal Enfield में आ रहे हैं. Even these are new shape. The main aspect of the bike was, in fact, there were the seats, both of them. Both the seats were completely worn off, फट चुके थे. So brand new seat covers with the same amount of red touch stitches on them. So yes, it took 1.5 months with the project, but yeah, as you can see now, it looks absolutely gorgeous. Mainly because जो spokes है गाड़ी के, उसको भी हमने blackout किया हुआ है. These are not chrome. कुछ projects पे लोग ये करते हैं कि they forget the whole cause of the project. और इस चीज में हम लोग क्या कर देते हैं कि we keep some parts chrome and then mix match it. Nothing works like that. So what we had thought of, red and black concept, and this is what it is going to be. Spokes were all blacked out. These are all heat resistant paint. Also the guard, even the guard has been taken care of. The guard is also heat resistant paint now. Talking about the exhaust part, if you can see from this side, the complete exhaust assembly is also blacked out. Now this is what it makes it look much classy. Notice the red color on the bike. This specific color is coming from the Harley Davidson Street 750. यही कलर था जो देख के कस्टमर को पहले मन हुआ कि कलर पे मुझे अपनी बाइक करनी है. And that's how we pulled out a panel, sent it for the color match, and this is how the final look is.
आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ बुलेट रेस्टोरेशन जो हमने पूरा किया है. जो चीज़ आपको पसंद आई है जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. इन द मीन टाइम वी हैव दिस हायाबुसा जिसका वीडियो हम जल्दी ही ड्रॉप करेंगे. एंड साइड बाय साइड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. वी कीप पोस्टिंग देयर कंटिन्यूसली कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट DM us on Instagram. The link is mentioned in the description. And yeah, see you in the next video with some more restorations and some amazing projects that are lined up in the coming future. So till then, keep riding, keep driving, stay adventurous.